student. Now we'll start awards in India in our GK book. Unscribble the letters and name these words. This is the second highest national award given for distinguished and the exceptional service in army field, including service rendered by government employee. वो है पद्म विभूषण. This award is the fourth highest civilian award in the Indian and comes after the Padma Bhushan. वो है पद्म श्री. Third, it is the highest gallantry award given to the officers and other enlisted personnel of all military branches of India for the highest degree of valor shown in the presence of the enemy on land, sea or in the air. Padmavir Chakra. This award is presented by the Government of India for outstanding contributions of the cinema. दादासाहेब फाल्के अवार्ड. फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर उनका ही अवार्ड होता है. This award is given for the outstanding performance in sports and games. Games और sports में अर्जुन अवार्ड. It is awarded to an outstanding coach who has trained individuals or team to achieve international success. द्रोणाचार्य अवार्ड. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इसरो, एंड द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर द रेफ्यूजीज रिसीव्ड द इंदिरा गांधी अवार्ड्स प्राइज इन 2014 and 15 respectively. This award was instituted by the Indian Adult Education Association for outstanding contributions to the promotion of the adult literacy. एडल्ट लिटरेसी के लिए नेहरू लिटरेसी अवार्ड. देन टर्न द पेज. 21st century India quiz. Answer the following question or fill in the blanks. In 2017 they become the chief minister of the state. 2017 में पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे कैप्टन अमरिंदर सिंह. उत्तर प्रदेश के थे योगी आदित्यनाथ एंड गोवा के थे मनोहर पर्रिकर. In 2014 the newest state of India was born, the state of Telangana, with the Chandrasekhar Rao being sworn as its first chief minister. It was carved out of the state Andhra Pradesh, which has Chandrababu Naidu as its chief minister. Third, in 2014, the NDA led by the BJP formed the government at the central. NDA stands for National Democratic Alliance. For the former cricketers Kriti Azad and the Sachin Tendulkar, singer Babul Supriyo, and the actor Hema Malini, जया बच्चन एंड रेखा आरोल, ये सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मेंबर रह चुके हैं. दे वेर और आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट. तो ये जो नेम दिए हैं कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे. वसुंधरा राज तो राजस्थान, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल, जयाराम तो वो थे तमिलनाडु. In 2070, a very special school was started on the waters of the Loktak Lake, India's largest freshwater lake. इंडिया की सबसे फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक थी. स्कूल फॉर द होमलेस चिल्ड्रन, ड्रॉप्स एंड द इलिटरेट एडल्ट्स. इट इज़ इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग स्कूल थी. इन विच स्टेट इज़ लोकेटेड मणिपुर. मणिपुर में ये स्कूल
की ऐसी फैसिलिटी की गई थी। बेंगलुरु बुल्स, दबंग दिल्ली, यू मुंबई, जयपुर पिंक पैंथर्स, पटना पायरेट्स, पुनेरी पल्टन, Bengal Warriors and the Telugu Titans are the name of the participating team in PKL. PKL stands for Pro Kabaddi League. Okay. फिर the Government of India has launched the Digital India project, ambitious governance initiative the completed by the 2019 1 lakh crore project will be ensured. 1 लाख उसके जो प्रोजेक्ट था उसमें ensure that government services are available to citizens electronically and that all villages in India have high-speed internet. 9. As part of the Swachh Bharat, many companies are coming forward to construct toilets in government school in village. फिर 10th, under its Cyber Swachh Kendra project, the government of India has launched mKavach and the Samvit. These are free antivirus software for smartphone and the personal computer for all citizens. Student, इस तरह जो भी हमने डिस्कशन किया वो आपको यहाँ तक अपनी जो जीके की वर्कबुक है उसमें कंप्लीट कर लेना है, जीके की जो टेक्स्ट बुक है उसमें। ओके, सो थैंक यू।